Hello everyone, before we begin, let me tell you this video serves as the first video of our Vibe Coder 101 series. Basically, in this series, technically speaking, in this series we are going to learn about generative, AI generative coding and all sort of project building. How can you build projects using AI and all sort of things. So in this video particularly, आज हम लोग एक बिगिनर लेवल टू डू प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं यूजिंग ऑल द वाइब कोडिंग ऐप एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर देम वन ऑन वन सो दैट हम जान सके कि कौन सा वाइब कोडिंग ऐप इज एक्चुअली गुड एंड यू कैन प्रीफर इट विथ व्हेन यू नीड इट. Hello everyone, Shri here and welcome back to my channel. So as you remember, last video was on Firebase Studio and it was kind of a tech video, so I was a bit hesitating कि ये इसको कैसे views मिलेगा and all, but to my luck it really got a good boom to it. मतलब अभी उसमें 200 views के around आ चुके हैं already. I don't know how it got so famous because मैंने उसे इतना share भी नहीं किया था as that is not my genre. But anyways, we got a good boom to it. So here we are with another tech video. Let's get to the point directly. In this video, we are going to test some vibe coding websites basically. जिसमें कि हम लोग कुछ prompts देंगे उन सारे के सारे websites को and we'll see कौन सा vibe coding website ज़्यादा better है in the basis of efficiency, UI UX and मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ओके, कौन इजीली एक अच्छा खासा मतलब वेबसाइट बना के हमें दे देता है बेसिकली एंड कौन सा वाला नहीं दे पाता है. स्टार्टिंग अगेन, व्हाट इज वाइब कोडिंग? वाइब कोडिंग इजंट एक्चुअली अ स्ट्रिक्ट टेक्निकल टर्म बट वो एक कम्युनिटी ड्रिवन टर्म है बेसिकली. वाइब कोडिंग बिकॉज इट गिव्स यू वाइब, लाइक यू आर नॉट जस्ट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट writing the prompt and it is typing all the codes in a very fast paced manner, so you feel the vibes that yeah, I'm coding something. So it is kind of a phrase that is used famously in the community. तो ये मत समझना कि vibe coding कोई actual technical term है for AI coding. No, बस उसे बोला जा रहा है, ठीक है. So okay, coming from that, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं to test और जितने सारे भी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे कि बोल्ट हो गया, रिप्लेट हो गया, उन सबको हम टेस्ट करने वाले हैं. बेसिकली टेस्ट करके हम देखने वाले हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट है. ठीक है, किस बेसिस पर हम देखेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट इज यूआई यूएक्स, क्योंकि यूआई यूएक्स अगर एक वेबसाइट का अच्छा नहीं रहता तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना एडवांस यूआई यूएक्स हो उतना ही अच्छा होता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज आवर UI UX, देन फंक्शनैलिटी, कैसे वो प्रॉपरली फंक्शन करता है या नहीं, मल्टीपल पेजेस बनाता है या नहीं, एंड एफिशिएंसी ऑफ द कोड एंड टाइम, लाइक कितना टाइम वो कोड लेता है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. आई मीन वी वुड बी कैलकुलेटिंग ऑल दोज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज few things. Okay, so let's see if let's see which one actually comes out to be a great platform for vibe coding. मैं ऐसे रैंडम ऐसे चीज़ों पर तो नहीं करने वाला. लाइक मैं बहुत दिनों से ऐसे ट्राई करा था बहुत सारे ऐप्स, तो मैंने सोचा, दिमाग में आया यार करते हैं ये वाला चीज़, क्योंकि this should be done as there are so many websites and people usually get confused कि कौन सा यूज़ करना है यार. लवेबल यूज़ करें इस चीज़ के लिए, बोल्ट इसके लिए यूज़ करें, किसके लिए क्या यूज़ करें, क्यों यूज़ करें. So we'll basically sum it up in this one video. So let's get started. So guys, as you can see, I have already opened my Chrome and on the top you can check like we have all the websites that we are going to test today, like all the vibe code platform. Basically मैं अभी आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ क्या क्या वेबसाइट हम यूज़ करने वाले हैं. We are going to use 6 of these websites because I find these 6 to be the most efficient ones among all the remaining vibe codes. So first of all we have our obvious bolt.new. इस पे मैंने पर्सनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं बोल्ट पर. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट बोल्ट एंड इट्स फीचर, यू कैन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो इफ समवन कमेंट्स डाउन इट. लाइक आई वांट एटलीस्ट 30 likes in this because yeah, तभी जाकर मैं कुछ बनाऊंगा. So after that we have Lovable, then we have V0 from Vercel, we have CreatR, we have Polymet, we have Base44. So these 6 are the ones that are actually good and I have tested it before and I believe yes 6 are going to give a good comparison for testing. Now secondly you must be wondering कि हम आज करने को क्या वाले, लाइक क्या प्रॉम्प्ट उससे हम देंगे. सो बेसिकली हम इन 6 प्लेटफॉर्म्स को 2 अलग प्रॉम्प्ट्स देंगे.
एक beginner prompt, एक advanced prompt. So as you can see, I have the beginner and advanced prompt ready already. So first of all is just a dashboard style to-do list जिसमें कि to-dos वगैरह वो maybe like yeah it would have the functionality of add, delete, edit, I mean update and all those sort of things with like logic building, like logically क्या क्या delete होगा क्या वो सब properly जैसे एक to do app normal projects बनता है, ठीक है. So next we have a bit advanced, ठीक है, bit नहीं, more advanced, like I have given it to create an advanced portfolio website for digital agency, ठीक है. So yeah, इसमें extra क्या है, I have also given it tech stack to use React, JSAP and 3Js. Okay, obviously 3Js for 3Js and JSAP you might get like it is for animation and 3D interaction and all sort of things. So ये सब चीजें थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, ये पूरा बिगिनर्स है एंड यू मस्ट बी इंटरमीडिएट का है. वेल इंटरमीडिएट इज नॉट देयर बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि बिगिनर्स कितना फास्ट होता है, एडवांस कितना फास्ट होता है एंड इंटरमीडिएट तो उसके बीचों बीच आ ही जाएगा. सो या बिना किसी देरी के let's just dive into this. Okay, I'm really excited. I hope you are. So make sure you like this video and subscribe to my channel and let's go ahead. So first of all, we'll be just inputting the prompt in the bold, and as we click this, you can see now तीन अलग अलग वेबसाइट्स एक साथ मैंने साइमल्टेनियसली चला रखे हैं. फर्स्ट है बोल्ट, देन वी हैव V0 एंड देन वी हैव लवेबल ऑन द राइट. तो एज यू कैन सी V0 का ऑलरेडी खत्म हो चुका है एग्जीक्यूशन एंड वी हैव द प्रीव्यू राइट देयर. आई गेस नेक्स्ट अभी बोल्ड का होने वाला है, या बोल्ड का भी हो चुका है एंड देन विल बी हैविंग लवेबल. लवेबल इज बिट late, but yeah, ultimately they'll give us the good result. Then on the second panel we have on the left it is CreatR, and below you can see it is Base44, and on the right we have Polymet. So Base44 is the winner here. Okay, so guys, तुम लोगों ने देखा अभी we just had a kind of a competition and yeah, like according what we saw, VO is the winner. Then we had Bolt finished. Then we had Lovable. उसके बाद Polymet खत्म हुआ. उसके बाद Base खत्म हुआ. And then CreatR खत्म हुआ. So basically, like VO is the winner in time gapping. Like बहुत जल्दी खत्म कर दिया वो coding and it developed the to-do app really fast. So now one by one we're going to check out all the applications. So let's see किसका ज़्यादा better है. So first of all we are on bold right now, as you can see. So wait a minute. Yeah, okay, we have bold right now and we have, okay, 3 pages aren't working. Well, fair enough, we said only a single page, so उसने एक single page बना के दिया है. Let me add any task here, like go to gym. Let's see. Yeah, it got added. Nice. What if I say do homework? Yeah, probably this will be added too. What if, okay, I've done this, I can delete this, I can check this. अगर check कर लेता हूँ तो green हो जाता है, नहीं तो blue रहता है. Okay, nice. It is decent, somewhat decent. Other pages aren't working, so I believe this is all. Here's the date mentioned, task numbers mentioned. What if I delete one? Yeah, good, nice. It has a nice simple, purely simple format, nothing much to worry about in this. Let's go to Lovable and see what it cooked. I mean, yeah, देखते हैं. Okay, well, as compared to this, I believe this looks a bit better. Wait a minute, can we just do this? Yeah, great. Yeah, this one has a good dark vibes to it. Completed page isn't working. Okay, well, I can do this and this, but इसमें वो नहीं था. Nice. The side panel is collapsible, easily collapse कर जाता है. That's great. Let's see, adding a task. Go to gym तो हो गया. Go for shopping. Sorry. Yeah, great. It is like ये add आराम से हो जाता है. Okay, all पर ये दिखा रहा है. What if I press this? Let's see if, अच्छा हाँ, okay, active में नहीं दिखा रहा है.
बट कंप्लीटेड में दिखा रहा है. ओके, दैट्स ग्रेट. व्हाट इफ आई ऐड take a shower. Take a shower. Now in active we have take a shower. In completed we have go for shopping. Now what if I just press take a shower right here and it is gone to completed. Nice. This is great. This is good. Somewhat. This is actually good. ये वाला still काम नहीं कर रहा, but anyways हमें नहीं चाहिए अभी. Well, if I delete this can be deleted. Editing का option नहीं आता है. This has a date too. Decent. It is pretty decent. Nice. ऐसा ही चाहिए था. It is completely purely simple as like let me guys show you. नहीं, इसमें दिखाता हूँ. इसमें better दिखेगा, मतलब better आएगा इसमें perspective आप लोगों को. That if I just do this, you can see it has really simple component like header, sidebar, task input, task item, task list. बस उतना ही है और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है. ठीक है. And app.txt में उसके पास functionality कुछ है, बस that's all. तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है. लेट्स सी वीओ में कैसे बनाया है उसने. आई मीन आई हैव सम एक्सपेक्टेशन ऑफ वीओ एज ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत ही जल्दी. या नाइस. दिस लुक्स प्रीटी गुड. ओके. आई मीन इसका यूआई इसके कंपैरिजन लवेबल के एंड बोल्ड के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा मच बेटर टाइप सा लग रहा है. मच बेटर लग रहा है, like, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट पीपल प्रीफर, आई मीन जनरली लोग वीओ को ज्यादा प्रीफर करते हैं इन द बेसिस ऑफ फ्रंट एंड, इन द बेसिस ऑफ यूआई. इट गिव्स अस अ रियली ग्रेट कैची यूआई जिसको देखकर अच्छा लगता है, मतलब इट गिव्स अस अ मिनिमलिस्टिक यूआई. सो या वी हैड दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वीओ. So we are sorry for that cut. I mean I had some work to do. So now we are again at the VO and we are going to test if it's working properly or not. We have multiple pages and the multiple pages are working except the settings page. ठीक है. settings page को छोड़कर सब पेज काम कर रहा है. इस पे भी डेट है as usual, but इसका UI मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क टाइप सा थीम और बहुत मिनिमलिस्टिक दिख रहा है. So I'll just add a task. Let me just type something. Yeah, finish HW बस assignment. Sorry, HW बहुत पुराना हो चुका है. Assignment. Okay, finish assignment done. Laundry. Yeah. Then we can go with what? Cut hair maybe. Cute. Okay, anyways, so we have 3 tasks right now. Active 3 tasks, completed nahi hai. So what I'm gonna do is I'm just gonna tick this. We have finished this. So active में भी 2 दिखा रहे हैं and completed में 1 दिखा रहा है. That's great. Done. It is working as it should. मुझे ये दबाने की ज़रूरत भी नहीं है because I'm just pressing enter and it is just getting me to go. Nice. It is a nice thing. Like, yeah, simple. Well, honestly, V0 by Vercel actually बहुत जल्दी दे दिया हमें कोड, बहुत जल्दी comparatively compared to Bolt and Lovable, जहाँ Bolt 1 minute 32 seconds दिया, Lovable 1 minute 54 seconds, तब ये VO हमें 54 seconds, only 54 seconds में ही पूरा का पूरा to do application दे दिया with all the different sections and pages working. That's good. Now let's go to the CreatR and let's see what it does. Okay. We already have an error here. Error detected. Our system encountered an error. Please try it. Okay, so अभी से error आ रहा है. Let's see if without fixing the error ये काम करता है कि नहीं. Let me just type anything. Lol. Okay. Task remaining 1. I've completed it. Okay, completed page नहीं हो रहा है. Okay, pending. Completed. Okay, this is working. This is working, but this isn't. कोई बात नहीं होता है. So okay, let's type something else, like जैसे कि Shri. नहीं हुआ अभी. टास्क एडेड. ओके, अच्छा, सॉरी, 2 टास्क अभी पेंडिंग है हमारे पास.
Let me just delete one. Okay, one task is pending. So in the pending task we have this, and in completed we have this. That's good. So error क्या आया है इसमें basically? I don't know what's the error in this. But yeah, हमने वैसे भी error वाला part delete कर लिया है. So anyways, let's check the code. Layout. Okay, pages. इसमें pages, हर pages को एक ही में wrap कर लिया है. Nice. Okay. Styles, types, utils. Okay, great. Five icon. Okay, इसका कुछ five icon है probably. क्या है? Okay, no worries. Okay, that's good. That's good to see. I mean, somewhat it is working all right. CreatR. It took a lot of time as compared to these two. मतलब जहाँ पर ये 1 मिनट में खत्म हो गया, ये 3 मिनट या 3 मिनट के आसपास ले लिया इसने. Then we have Polymet. Let's see what Polymet has cooked. And we are at Polymet right now. And Polymet का एक चीज जो स्पेशल है, जो उसको थोड़ा सा अलग बनाता है, it's canvas. Its canvas is basically, you can say, a design panel like Figma. It gives us basic designs of items, or sorry, functions that features, or you may say sections that are going to be added. जैसे कि टास्क आइटम का एक सेक्शन हो गया, टास्क लिस्ट का एक सेक्शन हो गया, टास्क इनपुट का एक सेक्शन हो गया, फिर साइड बार का एक सेक्शन हो गया. ऐसा करके हमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा प्रीव्यूज देता रहता है, जो कि एट दी एंड ये सब समराइज होकर एक प्रॉपर ऐप वेबसाइट बनता है. So similarly, we have here our complete dashboard, and this is our prototype. We are going to test. We are going to switch to focus now. Okay, you can switch to canvas and check all the canvases here. But let's go to the focus now. Focus पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं. So okay, let me just delete this. I was just testing it right there. Okay, so यहाँ पर ऑलरेडी कुछ हमें दे रखा है, जैसे कि प्रिपेयर प्रेजेंटेशन फॉर स्टेक होल्डर्स, रिसर्च कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. ओके, आई ऑनेस्टली like the UI. It's a bit darkish effect. It gives a bit नहीं, पूरा ही dark है kind of. So I didn't tell it to make it dark or anything. Okay, ये toggle नहीं होता है. Nice. So okay, let us just add something like जैसे मैंने अभी gym add किया था थोड़ी देर पहले. We have here active task 5, completed is 1. Completed मतलब ये वाला जो task है, review project requirement. अभी अगर मैं gym पर टिक मार दूंगा तो अभी वो completed में चला जाएगा. Nice. सेटिंग्स एज यूजुअल काम नहीं करता है. सेटिंग्स के लिए हमें अलग से कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं. सो नॉट टू बिगिन विद दैट. ओके, लेट्स गो. दिस इज आल्सो गुड, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. अगेन, like just like CreatR, Polymet also took a lot of time. Now let's go to Base44 and see what Base44 has cooked. I really wanted to see, because Base44 मैंने personally पहले कभी यूज नहीं किया है. I had used this in this video specifically. So let's see. Okay, we have our preview right here. Maybe okay, great. My task पर हम क्लिक भी नहीं कर सकते, सेटिंग्स पर भी क्लिक नहीं कर सकते. ओके, ग्रेट. पेंडिंग 2 है. ओके, व्हाट इज दिस? अच्छा, ओके, ग्रेट. इट इज नाइस. इसमें एक जो चीज मुझे अच्छा लगा, which is this. क्या टास्क हो रहा है, get, post and all those HTTP things. I mean, if you are into coding, you must have an idea about that. So जो request जा रहा है उसका response क्या आ रहा है, वो सब basically हमें इस पर दिखा रहा है basically. So let's go with adding a task. Gaming. Let's add gaming. Add task. Pending is 3. Completed is 1. Let's see here. Yes, we got post. The post was कुछ क्या दिखा रहा है. Okay, gaming. Yeah, as you can see, wait, let me just do this. Yeah, as you can see, we have come on bro. Okay, as you can see, we have here gaming. हमने gaming input दिया था इसमें, so इसलिए इसने gaming दिया post पे. And इधर जब like get होता है ना, ये वाला get देखते हैं, चेक करते हैं इस get का response क्या था. ओके, नाइस. तो गेस्ट इसमें बेसिकली हमें दिखा देता है कि सर्वर साइड में क्या क्या चीज़ें चल रही है, कि क्या हम गेट कर रहे हैं, क्या हम पुट कर रहे हैं, क्या हम पोस्ट कर रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो दैट इज
एक्चुअली गुड एंड इसका ये थोड़ा सा स्टाइलिश एनिमेशन मुझे अच्छा लगा. It's great. Wow. Okay. I didn't expect this to be this. I mean, Base44 to give me such a good application, but it really gave us a great application as compared to rest of the others. मतलब पॉलीमेट का ठीक ठाक था, चलेगा. क्रिएटर का तो क्रिएटर में तो एरर ही आ रहा है, छोड़ो तो उसका उसका कंपैरिजन नहीं आ रहा. और VO, I mean yeah, V0, Lovable and बोल्ट का तो बहुत ही मैंने मतलब सिंपलिस्टिक ही था, इतना कुछ खास नहीं था. मुझे स्पेशली खास नहीं लगा, आई डोंट नो व्हाई. बट Base44 का थोड़ा सा अच्छा दिया है. एंड इसका रेस्पॉन्सिव भी है, बहुत अच्छा बढ़िया रेस्पॉन्सिव भी है. बिकॉज व्हेन वी स्विच टू एंड्रॉयड मोड इट गेव अस अ गुड रेस्पॉन्सिव पेज. लेट अस सी दिस इन एंड्रॉयड मोड. मतलब इसको मैंने एंड्रॉयड मोड पे अभी तक नहीं किया है. ओके नो वरीज, हम ऐसा कर देते हैं. लेट्स सी. नो ओके, V0 हमें जो भी दे रहा है it is not responsive. Okay, another thing, let's test Lovable now. Okay, lovable का just do this bro. Probably Lovable भी देता है हमें kind of वैसे करके. No worries. Bolt का देखते हैं what Bolt gives us. No, responsive. Yeah, somewhat good. Yeah, somewhat good. But as compared to all this, I really loved the Base44's preview. बहुत ही मस्त दिख रहा है, honestly मस्त दिख रहा है. Don't worry, I'll be sharing this projects. I mean, I'll be completing this project, adding more prompt in it, and I'll be sharing this project with you guys. Don't worry about that. Everything will be given in your description, in my description, in this video's description, basically. So yeah, Base44 wins this in terms of UI UX. But in terms of speed, VO is still the winner because it completed it really fast. बहुत ही fast उसने complete कर लिया है. Yeah, but UI के मतलब UI के perspective से अगर देखा जाए तो I believe we have Base44 the winner. Okay. And इसका handling भी बहुत अच्छा है. Plus it gives you this to analyze. It will give you a good idea about क्या responses जा रहे हैं, क्या request से कुछ हमें response क्या मिल रहा है, वो सब we'll get a good idea. We'll grab a good idea from this. इसमें जैसे मैंने request किया था, as you can see, title is gaming, status is pending. Okay, so we got a response. ठीक है, it got added to it. So similarly हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा enhanced एनालिटिक्स दिख जाता है, क्या कुछ चीजें होती है इसमें, थोड़ा इन डेप्थ दिख जाता है. सिमिलरली पॉलीमेट में वी गेट दिस कैनवस वेयर वी कैन चेक आउट ऑल द sections where sections UI before the prototype is ready. So it will also give us a good idea that yeah, हमारा चीज कुछ ऐसा दिखने वाला है before even it is built. So yeah, kind of you may consider Base44 is the winner for to do app. So guys, मुझे personally Base44 का UI ज़्यादा comparatively better लगा. But on the basis of pace, Vercel still is the winner. I don't know if we are going like now it is all between Base44 and Vercel. But technically speaking, all the vibe coder app are kind of good, but except CreatR, क्योंकि CreatR में मैंने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे जिसमें एरर आ रहा था. So I would not recommend CreatR as a vibe coder app. But you may use primarily VO, Lovable, Base44 for now. I mean, I don't know. You may go for, you can use this like chronology. Like you can go for, if you want UI, you can use V0 by Vercel. If you want a good full stack with proper UI with good functionality, you can go for Lovable or Bolt. Yes, Bolt is also capable क्योंकि अभी Bolt पर Stripe का इंटीग्रेशन भी आ चुका है जिससे हम लोग पेमेंट गेटवे वगैरह कर सकते हैं, उसमें पेमेंट मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट अगर आगे जाकर तुम्हें कुछ भी अगर लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, you can just don't have to code anything, you just have to do it on the Bolt. That's all. And then I would recently, like as of today, I would suggest Base44 also because मुझे जितना लगा Base44 is giving a good decent UI.
we'll be trying Base44 throughout our series. I mean, yeah, this is obviously the first part of the series. And yeah, Polymet is somewhat good if you want canvas. Like if you want to prefer canvas, you can see the preview one by one and then we can go for the complete prototype. तो मतलब Polymet और CreatR को इतना priority में नहीं दे रहा हूँ. तो basically we don't have a particular winner in this series, but yeah, you can say I would still prefer to go with V0, Lovable and Bolt as primarily. Secondary, Base44 is good. You can opt for it. Yeah, so this was like today. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हमें नहीं करनी है. ठीक है, ऑलरेडी 20 मिनट्स प्लस हो चुका है. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रोबेबली एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द टूल्स. And in the final video of this series, we are going to have a very huge project. And in that project, we are going to compare all this vibe coding platform, okay, including Replit. I missed the Replit in this video, but I'm going to use it in the next video. I'm going to show it to you. Okay, so I guess आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं बहुत जल्दी. ठीक है, ज़्यादा लेट मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने में मुझे बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं. सो मैं ये वीडियो आराम से बना सकता हूँ. बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग एक टूल के बारे में बात करेंगे. इन्हीं में से कोई एक वाइब टूल के बारे में जिसको मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा एंड कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. टाटा, बाय बाय.